यस, शुरू करो रोहित। Yes, sir. Hello, good evening, everyone. My name is Rohit Yadav. Today, my topic is homework. As you all know that we go to school and our teachers give us homework, but which is very useful for us, and we improve our handwriting, our writing capacity by homework, and by homework we also learn also learn the chapter with the teacher taught with the teacher teach us today, and homework is very useful for everyone, but when we have another work and then the teacher give homework, we got angry so much, and homework is very important for everyone. That's it, sir. वेरी गुड। ठीक, ऐसे और थोड़ा सा अच्छा लाओ। जल्दी बोलना नहीं होता है, थोड़ा सा रिदम होता है इस लैंग्वेज का, समझ गए ना आप? हाँ, यस निशा आओ। रुक जाओ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। कहाँ है निशा? यस, हाँ निशा बोलो। Yes, sir. Hello everyone, my name is Nisha. I am the student of Raman Online Interactive Classes from batch 11, and today my topic is homework. We all know that homework is very important and it should be given to all because it is a practice for all people. And every student gets homework by their teachers, but practical, not do by the homework. आराम से बोल, They don't. क्यों हड़बड़ा रही है, क्या हड़बड़ा रही है ऐसे? Yes, sir. They don't do the homework from passbooks and other refreshers. They do it. They do it themselves. And but some teachers give them much homework, not practical, but also was of writing. So students take it like burden and don't interest to do it, and 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 they also don't interest to read ऑल्सो read डोंट it टेक इंटरेस्ट। take interest to read it. So I think that homework should be given but practical, but that students and everyone can learn new things. That's it, sir. वेरी गुड। कोशिश कर, थोड़ा सा हड़बड़ाए मत कर, जहाँ हड़बड़ाती है वहीं खराब हो जाता है मामला। हड़बड़ाने की तो कोई बात ही नहीं है ना, जब एक हड़बड़ाई 4 थॉट्स को एक साथ बोलने की कोशिश करेगी तो कैसे आएगा? यस हर्षित। Yes, sir. Hello everyone. My name is Harshit More. I am the student of Raman Online Interactive Classes. Today's my topic is homework. As you all know very well that homework is very important for a student's life, as it is like a practice for a student. It must be given to a children, but um, there are some teachers who gives a lot of homework to a student. Then a student thinks that it's like a burden for me, and from that time he stops to do homework. So homework must be given limited. Homework is like a practice that must be done by every child. By the homework we can improve our mindset, our skills, and our knowledge. Uh, homework is like a training of our past work. So I think homework must be given to all, but it must be given limited. That's it, sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आराम से बोलो, ऐसे इसका इसका हो गया, फ्लो वगैरह सब इसका बढ़िया हो गया। हड़बड़ाओ मत बिल्कुल भी। अब इतनी प्रैक्टिस के बाद भी आप हड़बड़ाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा यार? यस हर्ष। Yes, sir. Hello, everyone. My name is Harshit. Today my topic is work. As we all know that we all go to schools, and our teachers gives us homework which is very useful for us. And if sometimes the teacher gives us more homework than our capacity, then we got angry to the teacher, गेट एंग्री, गॉट नहीं, and गेट एंग्री प्रेजेंट में तो आएगा। get angry with the teacher, and the teacher should not give much homework to the child, टू द and चाइल्ड, क्या टू चिल्ड्रन, टू स्टूडेंट्स। to students. चाइल्ड चिल्ड्रन बोलो, फिर चाइल्ड तो एक ही बच्चा हो जाएगा। ध्यान रखो एक एक चीज का आप। To students. Work improves our practice and our writing skills and our reading skills. That's it. ओके ठीक है, What एक एक चीज को ठीक करके बोलो। अब ऐसे नहीं कुछ भी चल रहा है। अब ये क्लासेस जो चल रही हैं उसको समझ लो आप, मतलब क्या है कोमल?
Yes, sir. Hello everyone, my name is Komal Berwat. Today my topic is homework. We all know that homework is very important and necessary for all because if we go to schools, so we बेटा इफ must, उधर लगा दिया, सो नहीं लगाते हैं, कितनी बार बता चुका हूँ आप लोगों को मैं। yes, sir. If हाँ, we go to school, we do work and the teachers give homework a lot of homework to their students and the students do homework but they do like a burden. So teachers do not give a lot of homework डू to their नॉट गिव या students, शुड नॉट गिव? should not give. फिर हाँ, And homework work is very important for all because with the help of work we can improve our writing skills, handwriting and reading and etc. एंड So we can say एटसेट्रा से पहले एंड नहीं लगाते हैं बेटा, पहले भी बताया मैंने तुम्हारे को। that homework and hard work is also important for all. ठीक है, That's it. अच्छा है, थोड़ी कमियां उनको ठीक करो, कुछ कमियां है, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है, उनको ठीक करो बेटा, समझ गए आप? हाँ, ठीक नहीं करोगे तो फिर मतलब नहीं है। यस दृश्य। Hello, good evening everyone. My name is Rashya Agarwal and today I am going to speak on the topic of homework. As we all know that the people going to the school, the children going to the school get homework by their teachers and that homework is very useful for them as that homework is given by the teachers so the bonding between the studies and the students do not break and the students also revise what they studied today in their school or in their class. Sir, homework. Sir, sometimes the teachers give more homework that are not That is in the. That is not. Sir, that's it. that is not suitable for a student। घबराए मतलब, यही तो मैं चाह रहा हूँ बस, अब यही तो थॉट्स निकलने आने चाहिए ना। मतलब कि बात ये है कि होमवर्क जैसे टॉपिक के ऊपर भी थॉट्स नहीं आएंगे तो कैसे काम चले। कोई बात नहीं, कोशिश करो आप सर, माइंड को और शार्प करो आप, है ना। हाँ, कोई बात नहीं है, कोशिश करो आप। रक्षित। Yes, sir. Hello, everyone. My name is Rakshit Maurya, and today's our topic is homework. So, first of all, I am telling about what is homework. Homework, the work given by anyone to do at home is called homework. And homework improves the skill of writing and handwriting, and learning is also improved by homework. So, homework is very important and teachers should give homework to students, but teachers should not give a lot of homework to students because the student do not get enough time to do homework and their homework remains half, so the next day they get punishment. So teachers should give a limited homework for a day, and homework is very important because by doing homework students also revise the chapters and sir, that's it. वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा, कोशिश करते रहो। यस मोहित। Yes, sir. Hello, sir. Good evening. My name is Mohit. Today, my topic is homework. As you all know that in every school, homework should be given to every student by the teacher, and I think that homework is very important for students because by which student can improve their इससे writing. बाई विच मत लगाओ भाई, बिकॉज बाई इट, Because why it क्योंकि इसके द्वारा या जिसके द्वारा। इसके द्वारा। जिसके द्वारा कैसे आ जाएगा? पहले वाले क्लॉज को देखो, आपने क्या बोला है? होमवर्क दिया ही जाना चाहिए इसके द्वारा। एक मिनट, होमवर्क शुड बी गिवन बिकॉज, होमवर्क दिया जाना चाहिए क्योंकि, जिसके द्वारा या इसके द्वारा? इसके
इसके द्वारा। तो इसके द्वारा तो फिर बाई विच क्यों आएगा? कितनी बार समझाया मैंने तेरे को ये बात? बिकॉज बाई इट मेरे भाई, छोटी सी बात है ये। हाँ, Because by it, every student can every student can improve their reading skills and sp- writing skills. And in the summer holidays, teachers teachers gave more homework to every student. By which in the holidays, all student always does your work. Because टाइम इज ओवर, 1.25 मिनट हो गए। टाइम पे खत्म करने की कोशिश किया करो, पिछले बार भी ये प्रॉब्लम रह गई थी आपके साथ में। टाइम पे खत्म करने की कोशिश किया करो भैया, 1 मिनट का मतलब 1 मिनट में पूरा होना चाहिए। 1.25 मिनट दे दिए मैंने आपको, 1.5 मिनट से भी ज्यादा मैंने आपको 15 सेकंड दे दिए। एक तो वहां गलतियों में इतना उलझ जाते हो आप। पकड़ो ना इस बाई विच को, कहाँ यूज करते हैं। जिसके द्वारा में भी बाई विच और इसके द्वारा में भी बाई विच लगाओगे तो कैसे चलेगा भाई? बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन इन चीजों को ठीक करो अब। ये जो कहीं पे छोटे छोटे छेद रह गए ना, इनको भर लो फटाफट से। लाइफ टाइम प्रोग्राम थोड़ी है बेटा अपना। अब तो लास्ट चल रही है क्लासेस आपकी, ये मान लो एक तरीके से। इस बैच की तो लास्ट ही चल रही है, और क्या है। यस, कोई बात नहीं है, कोशिश करो आप, ठीक करो इन चीजों को। यस, इच्छा। Yes, sir. Hello everyone, my name is Ichha Singh and today I am telling about homework. I think homework should not be given to the students because by homework students can student become feel so heavy and and student student waste their time to do their homework and they do not play other games. दे कैन नॉट प्ले। Okay, sir. They cannot play other games because there is too much homework to them. So, in some schools, in some schools, teachers also give so much homework to the students. So they should not give so too much homework to the students because if there will too much homework to the students, so then students also then there then सर ज्यादा क्या सेंटेंस से पता चलेगा मेरे को, ऐसे कैसे पता चलेगा? then there are so much copies in their bags and they go their schools to their with their heavy bags. शाबाश, ऐसे ही आएगा बेटा, ऐसे ही आएगा। हाँ, And so teachers should not give too much homework to the students. That's ओके, it, वेरी sir. गुड। तुमने भी 1.25 मिनट लगाए, लेकिन ठीक है, अच्छा बोला। यही है बस, ये जहां अटकाव आ रहा है ना, अब इसी को ठीक कर लो आप बस। ये होएगा ठीक तभी जब अपन कोशिश करेंगे। ये छोटी मोटी चीजें रह गई हैं, जो ये लास्ट का टाइम जो चल रहा है ना आप लोगों का, इसको ठीक कर लो अब आप। यस, रिया मैडम कहाँ थे? रिया कहाँ है? यस सर। पहले तो ये बताओ, 2 दिन कहाँ थे अब? सर कनेक्शन इशू के कारण बोल रहा था, और दूसरा भी हमारी क्या 1 है 2 3 4 5 6 7 उधर जाना। मैडम 7 दिन की छुट्टी हो गई है आपकी, 24 दिन की क्लास में। अब आप बोलो अपना टॉपिक। टाइम चालू हो गया आपका, 1 मिनट मिलेगा, बस बोलो फटाफट। So homework is very useful for students, and homework helps us to improve our brain power. Homework improves our other skills like reading and writing. Student it is useful, but sometimes I feel that teacher should not give too much homework to the students because it is not good. It is not good. Student can't do anything else, but I think क्या हुआ? that
क्या हुआ बेटा? कनेक्शन इशू हो जाता है। ये तो बात है ना, नहीं आ पा रहा है ना तुम्हारा मतलब, क्योंकि बिकॉज रेगुलरिटी नहीं है, छुट्टियां पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा हो जाती हैं। कारण कुछ भी रहा होगा, मुझे नहीं पता, पर ये प्रॉब्लम यही आ रही है बस। जहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं होगी अपनी, वहां पर ये प्रॉब्लम होती है। चलो कोई बात नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच।